Particular college class, there are male and female students. Some students have long hair and some students have short hair. So okay, so we have a class, there are male students and female students. So we have two categories of students, one is male and one is female. The next information given is some students have long hairs and some students have short hairs. So long hairs and short hairs. Write the symbols for the probabilities of the events for the parts A through J. Note that you cannot find numerical answers here. You are not given enough information to find any probability values yet. Concentrate on understanding the symbols. So we're just going to write the symbols. So let's say F be the event that a student is female. So if it's written F, it means we have male and female students in the class as it is stated in the first line. So F means the student is female. M means the event that student is male. S is the event that student has long hairs, and L be the event that student has S be the event that student has short hairs, and L is the event that student has long hairs. So first of all, we need to understand that in this question there is a class in which there are male students, female students. Some have long hairs, some have short hairs. The female students, we have to let F be the event for the female, M for male, S for short hairs, and L for long hairs. Now we are going to solve the parts from A to J. These are the questions that we are going to solve, and we are not able to give any numerical answers for these questions. Okay, so question number A says the probability that a student does not have long hairs. Student does not have long hairs. So if student have long hairs, the probability will be represented if the student has long hairs. If we say student has long hairs, so what will be the probability? Probability will be L. But here student does not have long hairs, so probability would be 1 minus probability of L. And 1 minus probability of L is also called probability of L complement, which is equal to probability of S. So in these questions from A to J, we are just going to write these symbols like this. We are not going to write any numerical answers. The probability that a student does not have long hairs means अगर long hairs होते so it would be probability of L. तो नहीं है तो L complement means 1 minus probability of L. Okay, coming to the P part. The probability that a student is male or has short hair. So now there are two things. They are saying either male है, one thing वो कह रहे हैं male है, और other वो कह रहे हैं short hairs है. आप बताएं. When or is used, we are going to write or. So it means answer with probability is either male or short hairs. या तो male होगा या short hairs होंगे. C1. Very easy question है. इसमें just you are going to write the symbols. The probability that a student is female and has long hairs. अब हमारे पास है probability. They are saying female and A and D and is used and long hairs. D. The probability that a student is male given that the student has long hairs. Now conditional probability. और हमें पता है how to write a conditional probability. So in the conditional probability we have to write student is male given that का मतलब होता है we have to put a line here and write student has long hairs mean L, M by L. Okay, now E part. The probability that a student has long hairs, again long hairs given that the student is male, so it's going to be L over M. Now D part में और E part में जो difference है you can check it. For the conditional probabilities in D part, it's probability that a student is male given that the student has long hairs. So male over long hairs. But in the E part, student has long hairs given that the student is male. So जो पहले आएगा वो आप ऊपर लिखेंगे और जो बाद में आएगा that will come afterwards. This is the very easy method to write the conditional probability. F. Of all the female students, the probability that a student has short hairs. सारे female students हैं और we need to know that student has short hairs of all the females. So the
number all the total number is always going to come downwards. So of all the female students, probability the student has a short hair. What we have to choose? We have to choose the short hairs. शॉर्ट हेयर्स हमने जो चूज़ करना है वो हम पहले लिखेंगे. ऑफ ऑल द फीमेल स्टूडेंट्स जो हम चूज़ करेंगे वो हम पहले लिखेंगे. ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विद लॉन्ग हेयर्स, जी, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विद लॉन्ग हेयर्स द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ अ फीमेल. तो हमने चूज़ किसको करना है? फीमेल को. लॉन्ग हेयर वाले सारे लोगों में से, यानी कि हमने लॉन्ग हेयर वाले सारे लोगों में से जो कि बॉयज़ होंगे और गर्ल्स होंगी उसमें से वी हैव टू चूज़ द फीमेल्स. तो जो चूज़ करेंगे वो हम ऊपर लिखेंगे और जो सारे टोटल चीज़ होगी डेट विल राइट हेयर एफ ओवर एल. जी के बाद वी हैव एच. ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज़ फीमेल और हैज़ लॉन्ग हेयर. अब ये और वाला आ गया फीमेल और लॉन्ग, तो और तो बहुत आसान होता है फीमेल और लॉन्ग. ओके, उसके बाद आई आ जाएगा. व्हाट इज़ आई? द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट इज़ मेल स्टूडेंट विद शॉर्ट हेयर. मेल स्टूडेंट है और उसके शॉर्ट हेयर्स, मेल भी स्टूडेंट भी है और उसके शॉर्ट हेयर्स भी हैं. सो एम एंड एल आएगा, सॉरी एस आएगा, मेल एंड शॉर्ट हेयर्स. लास्ट वन इज जे. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज फीमेल, नथिंग, वेरी सिंपल, पी एफ. तो ये क्वेश्चन थे जिसमें वी हैव लर्न कि कैसे सिम्बल्स को लिखते हैं. ठीक है, कैसे वी हैव टू राइट और होगा तो जस्ट गोइंग टू राइट देम. दोनों काउंट होंगे तो वी हैव टू राइट एंड. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी तो टोटल जो होता है वी हैव टू राइट इट आफ्टरवर्ड्स, और जिसमें से हमने चूज़ करना है और जो चूज़ किया है लाइक मेल फ्रॉम द लॉन्ग हेयर्स फ्रॉम द मेल. इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज, this was a part in which there were no numerical answers. Okay. Use the following information to answer the next 4 exercises. A box is filled with several party favors. It contains 12 hats, 15 noise makers, 10 finger traps. Okay, this is the question that you may have understood it, right? I'm just taking a pause. Okay. So use the following information to answer the next 4 exercises. A box is filled with several party favorites. It contains 12 hats. So there are 12 hats. 15 noise makers. 10 finger traps. And 5 bags of coffee tea. So these are all the things that are given. Now let H be the event given a hat. Hat को जो है we will write H for hat. N is the event given for a noise maker के लिए we will write N. F be the event given a trap, finger trap के लिए we're going to write F. And C for the coffee tea we're going to write C. So ये सिंपल्स हमने यूज़ करने हैं. अब they are saying find the probability of P of H. तो जब भी हमने probability फाइंड करनी होती है वही नो, सबसे पहले हमें टोटल पता होना चाहिए. तो हमारे पास टोटल क्या होगा? लेट्स ऐड देम ऑल. It's going to be 42. जब तक हमें टोटल नहीं पता होगा we cannot find out the probability. So the first thing is to find the total number of events, which is equal to 42. Now we are going to do for question number 2, probability of H. So number of hats by total number of hats by total number of events. So number of hats है हमारे पास 12, total is 42. So it's going to be 2/7. The probability of H is 2/7. Coming to question number 3, probability of N. Okay, N is noise and there are 15 and the total is 42. So 15 over 42 can be simplified with the table of 3. 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So 5/14 will be the answer of this probability.
Okay. Question number 4 is probability of f. Okay, so f is 10 fingers and there are 10 over 42. You are always going to write the total number in the denominator. 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Question number 5 is probability of c, which is 5. 5 by 42. 5 by 42 cannot be simplified, so 5 by 42 is the answer as such. Okay, so we have completed this question. Very easy. Whenever you have given different events, you're just going to total them, and total number is going to come in the denominator, and number of the things which we need to find out is going to come in the numerator. Simplify it and we will get the answer. Okay. Next question is, we have done question number 5. Okay, use the following information to answer the next 6 exercises. A jar of 150 jelly beans contain 22 red jelly beans, 38 yellow, 20 green, 28 purple, 26 blue and the rest are orange. So very easy. सबसे पहले what are the total number of jelly beans? टोटल हमने सबसे पहले लिखना है, और हमें इस क्वेश्चन में टोटल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव रिटन अ जार ऑफ 150 जेली बीन्स एंड के टोटल आर 150. नाउ बीन्स कंटेन्स 22 रेड. अच्छा, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि किसको क्या. बी फॉर द ब्लू, G for the green jelly beans, O for the orange, P for the purple, R for the red and Y for the yellow. So first of all let's say B. हम सबका लिख देते हैं कि कौन किसकी क्या है. तो B है, फिर G है, फिर O है, फिर P है, R है एंड देन Y है. ओके, सो ओके, 22 red jelly beans. So red are 22. 38 yellow. Yellow is 38. 20 green. 28 purple. 26 blue. और रेस्ट आर ऑरेंज. तो ऑरेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस साइड पे कर रही हूँ, और जस्ट गोइंग टू ऐड देम ऑल एंड देन सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल. सो 26 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 22 प्लस 38. मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ. ऐड देम ऑल एंड देन टेल मी द आंसर. So it's 134. The total are 150 minus 134, which is equal to 16. So the oranges are 16. So बहुत easy था ऑरेंज फाइंड करना है. सबको टोटल करके जो गिवन थे उनको टोटल किया और टोटल में से माइनस कर लिया, वी गेट 16. अब हमें सबका आंसर मिल गया, तो अब हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी, तो बस जस्ट हम इसको लिख लेते हैं. पहले हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, 26 ओवर टोटल. टोटल क्या है 150. Let's simplify. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 5s are 10. Question number 7. Probability of G. Probability of G क्या है, 20 over 150. 0 0 से cancel, we will get 2 over 15. Question number 8 is
probability of purple, which is equal to 28 over 150. Question number 9. Probability of R means red. So red one was 22 over 150. Question number 10 is probability of Y means yellow, and yellow is 38. 38 over 150. Question number 11 is probability for orange, जो हमने लास्ट में फाइंड की थी, that is 16. Probability of O, which is 16 over 150. So we have completed this question. कितना easy था? We have done it easily, completed it. अच्छा, next is use the following information to answer the 6 exercises. There are 23 countries in North America. अब हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम लिखते जाएंगे ताकि हमें इजी हो जाए. 23 कंट्रीज़ इन नॉर्थ अमेरिका हैं, 12 कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका, 47 कंट्रीज़ इन यूरोप, 44 कंट्रीज़ इन एशिया, 54 कंट्रीज़ इन अफ्रीका एंड 14 इन ओशिनिया, पैसिफिक ओशन. ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया है ए, which is the event countries in Asia, then E, F, N, O and S. Okay, तो अब हम क्या करेंगे, A is the evented countries in Asia. तो एशिया में कितने, 23 कंट्रीज़ इन नॉर्थ अमेरिका, 12 इन अमेरिका, 47 इन यूरोप, 44 इन एशिया. एशिया में है 44, तो A की इज़ द इवेंटेड 44 इन एशिया, तो 44 आ जाएगा. फिर E इज़ द इवेंट फॉर यूरोप, तो यूरोप में कितने हैं, 47. फिर F इज़ द इवेंट फॉर अफ्रीका, अफ्रीका में है 54. N इज़ द इवेंट फॉर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले 23. फिर O इज़ द इवेंट फॉर ओशिनिया, 14. S इज़ द इवेंट फॉर साउथ अमेरिका, 12. ठीक है, जब हम ये लिख लेते हैं तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है. सो अब हम इजीली इनकी प्रोबेबिलिटीज़ इन्हीं के आगे फाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द टोटल वैल्यूज़. टोटल जब तक हम फाइंड नहीं करेंगे वी कांट फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़. सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल फर्स्ट. 44 प्लस 47 plus 54 plus 23 plus 14 plus 12. So total is equal to, okay, so tell me what is total equal to. I'm giving you 30 seconds to solve this. Okay, it's 194. Hopefully you have solved it too. Now let's solve the questions 12 to 17. Question number 12 is probability of AEF. A,
Okay, so NO and S. ओके लेट्स सॉल्व देम. ए. अच्छा, अब हमने ऑलरेडी लिख लिया है कि हाँ व्हाट इज़ द इवेंट नंबर फॉर द इवेंट ए, दैट इज़ 44 एंड द टोटल इज़ 194. सो बहुत ईजी है सॉल्व करना. टू जस्ट सिंप्लीफाई E 47 over 194, F 54 over 194, which is equal to 2. N 23 194, O 14 194, S 12 194. So here we have completed the question.